नमस्कार, आप देख रहे हैं मरुधर बुलेटिन और हम आज है बीकानेर के रेतीले धोरों पर, जहां पर महाजन फील्ड फायरिंग में आज अमेरिका और भारत के बीच युद्धाभ्यास का आरंभ हुआ, जिसमें युद्धाभ्यास में एक दूसरे के साथ तालमेल बिठाकर एक दूसरे को किस तरीके से समझा जा सकता है, वो युद्धाभ्यास आज से शुरू हुआ है और लगभग 15 दिनों तक ये चलेगा, जहां पर एक दूसरे को समझने के साथ साथ आतंकवाद से लड़ने और किस तरीके से साइबर अटैक्स पर काबू किया जा सकता है, इसको भी एक दूसरे सेनाएं समझेगी। भारत और अमेरिका की टीम, अमेरिका की जो सेना है वो यहाँ पर पहुंच चुकी है, जिसमें 270 के लगभग 270 जो है जवान शामिल है। बात करेंगे कुछ वेपन्स के बारे में, यहाँ पर वेपन्स को भी डिस्प्ले किया गया उनके बारे में, उनसे बात करेंगे किस तरीके से कितने कारगर ये साबित होते हैं और किस तरीके से उनको यूज किया जाता है। फर्स्ट आई विल आस्क यू अबाउट दिस वेपन इज व्हाट इज द नेम ऑफ दिस वेपन एंड हाउ it is used in wars. Okay, so this weapon name is M250 cal Madus. It's used as a heavy machine gun in a mounted and dismounted position. As you can see right now, this is a dismounted position. It's on tripod, and if you can look up on your right, it's behind you is on mounted position on striker. It can be used for a defensive position or even for like offensive tactics against enemy combatants. It's very good against from personnels to small to medium vehicle structures, and it shoots 50 cal rounds and 50 cal tracers. What is the key features of this weapon? It has three pieces at the moment right now: the barrel, the receiver, and the tripod. Okay, so do you think this is the good weapon to use in wars, and how is it is useful in the war? Well, it's one of the best weapons, and it is one of the most casualty producing, and also most keeping the enemy downrange. How far it can attack on the enemy? If you look at the chart, it says maximum range is 7,400 yards. That's like a 4.5 click, but max effective is 1830 meters. That's two clicks. और भी हम सवाल पूछेंगे. What do you think about this युद्धाभ्यास between the America and India? It is very useful, or it is good for the America and India's relationships. What do you think about this? It's really healthy for both relationships. It's really important that we keep a good partnership with partners overseas, all over the world, especially in Asia. India has a very interesting dynamic with their military. They have issues domestically and abroad. Their defensive positions are really important as well, and there's just a different exposure, different experiences that can be shared across international relations. How it helps to improve our forces? How it is helpful to improve our forces? Well, any chance you get to expose yourself to new experiences and different points of view and different methods of accomplishing a mission is always very important. Even if the Indian Army does things differently than the U.S. Army does, there are still lessons that both armies can take away from that exposure and that encounter that they can implement that back at home. And we will get the good relationship after this Yuddha And what do you think about this ceremonies to time? How often it will be done? I'm sorry, can you say that again? My ears are bad. How often it will be arranged to do the more improvement in relationship between the America and Bharat? Well, every time the U.S. Army does anything, there's always an after-action review of whatever event took place. So whatever lessons we learn from this, we will take home and fix. And then when we come back either next year or the year after that, we will be able to fix whatever issues we encountered and then make the next year even better. So we can't do this often enough. It's a really great experience. So what are you going to do in next 15 days with what kind of equipments will you bring in the India from your America, and how will you do in the India? Well, we were lucky enough to get attachments from Special Forces Security Brigade. We were able to get sniper attachments as well, so there'll be lots of lectures, lots of periods of instruction from really specialized units. And then both the U.S. Army and the Indian Army will be exposed to that, because I know there will be some topics introduced that we are not experts on, that those particular units are experts on. So it's a training event for both the Indian Army and us. And then those will be taking place over the next week or two, and then there'll be a field training exercise. We'll be doing cordon and searches and attack by fires and working laterally across the battalion.
What do you feel about the Indian forces? Do you think there any difference between the American or Indian forces? What do you think? Where you see the differences? I see differences. The Indian Army they hold true to a lot of their traditions. You really see that, especially in the parade and the music and the language used for describing their military and the meaning and behind the symbols. So there's lots of traditions and lots of very deeply held beliefs that is really, really impressive to the U.S. Army. The Indian Army, as far as their discipline and their rank structure, it's very, very similar to the U.S. Army, but it's really great to see such a really put together force. They've put a lot of work into this event, and they've been so hospitable, and we really can't thank them enough. And my last question is to you, sir. What's your feeling in India? In India, it's a beautiful country. There's lots of parts of it that honestly remind me of home. There's great people, very hospitable, very kind. It just seems like a country full of hardworking people just trying to do their best to make a living and live peacefully. थैंक यू सो मच। ये थे हमारे साथ अमेरिका के सर जिनसे हमने बात की। और भी वेपन्स के बारे में हम जानकारी लेंगे, जिनसे हम बात करेंगे कि क्या व्हाट इज दिस वेपन एंड हाउ इट इज, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस वेपन एंड हाउ इट इज यूज्ड इन द वॉर। So this is the M17 Sig Sauer pistol. It shoots a 9mm cartridge, has a 17-round capacity, and this is a sidearm that we would use for example, our machine gunners or for our squad leaders, higher enlisted officer types. And this is for something that we would use in a close quarters situation where, like, say if a machine gunner has to go and clear a room or something like that, he can't actually use a machine gun because it's just too big and unwieldy. Where we would use this because we can hit targets at up to 50 meters with this weapon system. And I've actually had the pleasure of using this. This is a very accurate, very lightweight, very good pistol. And one of the neat features about this pistol is that if you look right here, you can see that the grip size is a medium, which means you can actually resize this pistol for any kind of shooter out there, regardless of hand size. So you get somebody like me who's got really big hands, they actually have a specific grip for my size of hands. So. And how often it is used in the wars? Say again? How often it is used in the wars and for enemies? How it is useful to attack on the enemies? So when I was in Iraq, when I deployed 2 years ago, I was a 240 gunner. And one of the things I always had on me was this, because everywhere you went, you had to carry a weapon with you. This is a lot easier to carry around with you than, for example, our 240 Bravo that's over there, because it's a lot lighter, a lot smaller. And whenever we practice room clearing and stuff like that, I would either use this or I would practice with an M4 over there, because this is a lot more useful in close quarters than trying to use a machine gun or something much larger, much more bulky. थैंक यू। और भी हम जानकारी लेंगे किस तरीके से। देखिए ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि इंडियंस जो हैं, इंडियन फोर्सेस के जो जवान हैं वो अमेरिका सेना के जवान से यहाँ पे ट्रेनिंग ले रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं कि किस तरीके से इनको यूज़ किया जाता है। हम और भी जानकारी लेंगे। यहाँ पर हम बात करना चाहेंगे और भी सर से जो कि जवान है इंडियन अमेरिकन आर्मी के। What is the name of this weapon and how it is used in war? Well, this weapon here is the M320, and we use this weapon in war against our enemies in like small groups or light armored vehicles. It is very effective with HE rounds. We can also use illumination rounds like flares and also smoke to mask our cover when moving up on enemy targets. This weapon is very light. It's like 5.5 pounds. It's very easy to handle, and you can also attach it to our M4 by removing this buttstock and then sliding it on the rail system of the bottom of our M4s. And how far it is attack on the enemy? If you The range of this. So on the map here or on the paper here, the maximum effective range for area targets 350 meters. Point target, which is meaning a singular person or singular target, 150 meters, and then the maximum range at a 45-degree angle is 400 meters. ये इन्होंने बताया कि किस तरीके से इनको यूज किया जाता है और कितना ये इफेक्टिव होती है वॉर्स के अंदर। और भी हम जानकारी लेंगे। ये आपको बता दें कि किस तरीके से अमेरिकी जो जवान हैं वो भारतीय जवानों को बता रहे हैं कि किस तरीके से इसको यूज किया जाता है।
What is the name of this weapon and how effective it is on wars and how it is used on wars? This is the M249 SAW. It's a light machine gun. We primarily use it as a support element in our fire team and our squad. That its main priority is not to engage precision, but it's meant to, in an area kind of effect. So what is the range of this weapon? How far it can attack on the... The effective range is 1,000 meters, but the maximum range overall is 3,600 meters. And how it is useful in the wars? How is it useful in the wars? It's useful because it allows our soldiers to be able to move under fire. We're allowed to, one or two of these going at a time is equivalent to maybe 10 or 15 M4s going at a single time. And what is the key features of this weapon? What Can is the key features of M249? The key features is that it is a belt-fed, gas-operated, air-cooled light machine gun. सो ये इन्होंने बताया कि M249 जो है किस तरीके से यूज़ आती है और मैं आपसे और भी बात कराऊंगा, बात जानेंगे कि किस तरीके से कौन से वेपन हैं जो यूज़ किए जाते हैं और किस तरीके से इनको युद्ध में काम में लिए जाते हैं जब ज़रूरत होती है. What is this weapon and how it is used in a war? Sure, you want to take a look at the M17 from SIG. So this is just a 9mm polymer SIG pistol. And what is this whole So this is our IOTV system. It's a plate carrier system. It holds a soft armor and a plate armor that is good for protection of the body when we're out in operations. Yeah. ओके तो ये इन्होंने बताया कि किस तरीके से और ये जो केप कैमरा है इसके बारे में भी हम जानकारी लेंगे. व्हाट इज द यूज ऑफ दिस केप कैमरा, व्हाट इज दिस वेपन एंड हाउ इट इज यूज्ड इन द wars and how effective it on in the wars? Sure. So this is Kevlar for head protection. Obviously, we can mount night vision devices on top, and it's just protection for operations, sir. Can you show some demo on anyone can wear this and give us a demo like if you can and anyone wear this helmet? Huh? If you can show if you think suitable or if you think good, so then you can. No problem. Okay. इट्स लाइक दिस. ये बता रहे हैं कि किस तरीके से इसको वियर किया जाता है और किस तरीके से इसको यूज किया जाता है और ये वॉर के अंदर किस तरीके से इसका काम लिया जाता है. सो व्हाट इज दिस एंड हाउ फार वी कैन सी फ्रॉम दिस. So we have different types of night vision devices. This is a PVS-14 down here, PSQ-15s. Depending on the illumination, we can see as far as the eye can see, and then if the illumination isn't so great, that distance diminishes. But, Can we see the back side also from this? excuse me, the Can we backside? see the back side from? Sure. Yep. So obviously protects everything that we want protected. Allows for peltors or hearing protection, and it's lightweight for operations. ओके ये थे हमारे साथ जिन्होंने बताया किस तरीके से हेलमेट जो है वो यूज़ किया जाता है. अब हमारे इंडियन आर्मी के भाई जो हैं हमारे देश की सुरक्षा जिनके हाथ में है वो हमारे साथ हैं, हम उनसे भी थोड़ी जानकारी लेंगे. ये क्या शस्त्र हैं और किस तरीके से इसको अपने युद्ध में यूज़ किया जाता है. ये सर ईगला मिसाइल हैं. इसको मेनली एयरक्राफ्ट के ऊपर के लिए यूज किया जाता है, एंटी एयरक्राफ्ट के लिए. ये जो भी हमारे दुश्मन के फाइटर्स वगैरह जो भी आते हैं उनके ऊपर यूज किया जाता है इसको. कितनी दूरी तक ये वार कर सकते हैं, कितनी दूरी इसकी क्षमता है कि कितनी दूरी तक? ये सर 5 किलोमीटर तक मैक्सिमम वार कर सकता है. ये इफेक्टिव ये 5 किलोमीटर का है. ठीक है. और भी हमारे सुरक्षा के जवान फोर्सेस के जवान यहाँ पर हैं, उनसे भी हम जानकारी लेंगे कि किस तरीके से ये क्या शस्त्र है और किस तरीके से इसको काम में लिया जाता है.
ये LRF है। LRF स्टैंड्स फॉर लेज़र रेंज फाइंडर। इससे हम किसी भी मतलब हथियार से फायर करते हैं तो उसका पहले हमें रेंज मालूम होना चाहिए। तो रेंज हमें इससे हम नापते हैं। इसका रेंज हम 80 मीटर से लेकर 20 किलोमीटर तक नाप सकते हैं। ये कब यूज किया जाता है? जब सीमा हमें पे टारगेट का बिल्कुल एक्यूरेट फायर कराना हो, जब कहीं टारगेट के ऊपर या कहीं एस्टिमेट नहीं, इससे बिल्कुल एक्यूरेट रेंज आएगा हमें, तो हम अपने जो वेपन है इनके ऊपर जो टारगेट लगाते हैं उससे डायरेक्ट फायर कराते हैं उनके ऊपर। इसके साथ में क्या वेपन्स जो पिस्टल है किसको यूज किया जाता है? नहीं नहीं, ये हर वेपन के लिए, जैसे लॉन्ग रेंज का कोई भी है, जैसे 2 किलोमीटर के ऊपर फायर करना, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, तो इससे हम रेंज नाप सकते हैं। हाँ जी, तो रेंज नाप ये सकते हैं। बताया उन्होंने कि किस तरीके से यूज आता है। एक और मैं देख पा रहा हूँ जो कि किस तरीके से इसका क्या यूज होता है ये भी हम पूछेंगे। ये किस तरीके से यूज किया जाता है और क्या इसका नाम है? इसका नाम है जूनियर लेवल स्विच बोर्ड मार्क 2 है। इसको मतलब यूनिट के अंदर कम्युनिकेशन के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है, जिससे मतलब लाइन कम्युनिकेशन के लिए, जैसे कि मतलब कॉल रिसीव और थ्रू कर सकते हैं हम, मतलब किसी का मैसेज ले सकते हैं और इसको दूसरे को दे सकते हैं मैसेज का। इसकी रेंज कितनी है? इसका रेंज है 30 से 32 किलोमीटर है। वजन? वजन इसका है 12 केजी। तो ये आपको खुद लेकर चलना होता है युद्ध के अंदर या फिर किसी मतलब गाड़ी में रखा? एक जगह पे लगाया जाता है, इसको सुरक्षित जगह पे लगाया जाता है, इसको कैरी नहीं किया जाता है। ठीक है। वन मोर थिंग वी विल आस्क यू, सो व्हाट इज दिस वेपन एंड हाउ इट इज यूज्ड इन द वॉर्स? कुड यू प्लीज say? This is ready set HX PRC 6020. HX PRC 6020 stand for pack roll, high transmitter pack roll communication. This ready set Trident made by Israel. The weight of this ready set 3.9 kilograms. This ready set comes with 2,85,000 channels. This ready set used for long communication and electronic warfare. This communication range is 10 to 25 kilometer using beep antenna and 25 to 250 kilometer using antenna dipole as per required frequency like a war. कितने चैनल्स हैं इसमें? 2,85,000 channels. This radio set works on radiation of waves in the sky waves. 4 radio sets such are in assigned to an infantry battalion. तो ये थे हमारे साथ सीमा के जवान जो आज यहाँ पर युद्धाभ्यास शुरू हुआ है अमेरिका और भारत के बीच, जहाँ पे अमेरिका की फोर्सेज 270 जवान भारत आए हैं जो कि अब लगातार यहाँ पर युद्धाभ्यास करेंगे और दोनों देशों के तालमेल को बढ़ाने की कोशिश करेंगे, जिससे कि तालमेल बढ़े और एक दूसरे के बीच में तालमेल बढ़ने से जब भी दोनों फोर्सेज की कहीं ज़रूरत हो तब उन दोनों फोर्सेज को एक दूसरे को समझने में समय नहीं लगे और दोनों फोर्सेज एक साथ मिलकर काम कर सके। कैमरामैन अभिजीत के साथ सागर चौधरी, बीकानेर।